invite the moderator onto the stage, and then he'll take over and invite the panelists, and then move into the discussion almost immediately. So, my good friend Khurram Shahzad, and please don't miss out on the fabulous handkerchief and socks. But in addition to those two attributes, he is an investor and entrepreneur and founder of AB Core or ABC or whichever one you want to do. So Khurram, you want to come up on stage? Thank you very much, Hamza Bhai. Thank you, Talib Saab. Thank you very much, sir, for holding this wonderful gathering. I'll start with a little intro of each one of our participants today. Basically, हमारे पास तीन बड़े startups हैं who have raised money, who actually solved some societal problem, and they were just a pain point actually, जो कि हमारी society जो इस वक्त face कर रही है. And all three, each one of them are basically, are actually at the heart of the issue, which is actually facing our economy these days. एक तो healthcare है, आप सबको पता है. Healthcare basically is one important area which actually directly affects the common man. तो healthcare में हमारे पास जो startup है आज, that's InstaCare, and they're actually solving this healthcare issue, which is faced by both, not only the society in general, but doctors and hospitals and the healthcare professionals. Yes. So I'd like to invite first Mr. Bilal Amjad, who is the founder and CEO InstaCare. Please come onto the stage. And then second, we've got a power lady. In fact, all the way she came from Lahore, and she's actually the strategy officer of Swift Logistics. हम ये बात कर रहे थे कि एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं एंड ई कॉमर्स जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रहा है. सो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्ट बिक रही है ऑनलाइन, बट द वाइटल लिंक इज लॉजिस्टिक्स, and these guys are actually are at the forefront of it, and they've made it big, Swift Logistics. And Sana Mela is with us today, who's representing Swift Logistics. Please welcome Sana. The third person is also making a lot of a lot of headlines these days, who actually is a winner at a global front, and I am witness to it. I am actually eyewitness to it when we were in participating in GITEX, which is world's largest technology conference that happens in Dubai every year. And this guy actually made it to the top in that conference. वहाँ पे 700 participants थे एक competition में, जिसमें 24 select हुए. Out of 700, 24 select हुए, जिसमें 11 जो है winners थे in different categories. There was no Indian, there was no other subcontinent, country representing, because actually, they could not make it to the top. Actually, Pakistan made it to the top, and this guy won it. His name is Zain Farooq. He's running a fintech company. He's just raised funds. So welcome this enterprising guy. Zain, please. Aye. Sir, thank you. So last but not the least, we've got this precision technology, or whatever you call it, deep tech, ये जो काम कर रहे हैं, ये सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनेबल कर रहे हैं, और एक ये कह लें कि कन्वेंशनल मॉडल को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और अपलिफ्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को. नंबर वन. अब जो साहब आएंगे, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने 20 साल जो है एयरफोर्स से लेकर इंस्टीट्यूशंस में सर्व किया है, और ये इन्होंने पाकिस्तान का पहला जेट ड्रोन खुद लोकली, टोटली लोकल जो है वो मैन्युफैक्चर किया है, और इस वक्त ये ग्लोबल मार्केट को सर्च कर रहे हैं पूरे रीजन में. ही इज़ द ओनली गाय हु एक्चुअली हैज़ पायलटेड दिस प्रोडक्ट विथ फूड पांडा. पूरे रीजन में पहली डिलीवरी जो यहाँ से पायलट की है वो वूटेक ने की है, और द फाउंडर इज मिस्टर बिलाल सिद्दीकी, डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी. प्लीज कम ऑन टू स्टेज. प्लीज वेलकम मिस्टर बिलाल सिद्दीकी. Yeah. And then, we have got this senior chair who's actually chairing this session, Mr. Waqar Aslam Saab. He's our senior, he's our mentor, he's our guide.
इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं. Thank you very much, sir, coming on board. Please have a round of clap for Vikas Ram Saab. So let's start the session. First, we will have a couple of videos and a couple of presentations from each one of them, and then we'll start our session, our discussion. So first, I would like to invite Sana Mela, who will give you a presentation, a brief walk through what these guys are doing. Please, Sana, come on the stage. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू खुरम फॉर अ लवली इंट्रो. मुझे लगता है कि सब काफ़ी थके भी हुए हैं और सो भी रहे हैं, और क्योंकि सेशन एंड पे है तो I'd like to keep it short and brief. We could move to the presentation. वो तो typically हमारे business के बारे में है, but before I start, I just want to ask a question to all of you who are here. आप लोगों में से कितने लोग, मर्द और ख़वातीन, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? Excellent. So all of you have something to do with me. आपने यहाँ नहीं देखा, हम भी करते हैं. Oh my God. Okay, and how many of you just buy clothes online? Fantastic. So this is a very interesting number, and I'll move to the presentation. Quickly telling you about who we are. So बहुत सारी ये जितने show of hands थे जो online shopping करते हैं, जब आप किसी भी online store पे कोई order place करते हैं और वो order place होने से लेके आपके घर तक जो deliver होता है उसके दरमियान जो service है वो हम हैं. We are an example of that service. बहुत सारे और भी entrants हैं market में, but Swift is one of them. हमारी उम्र 2 साल है तकरीबन, और yeah. So in 2 सालों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत grow किया. We're now serving across 300 destinations across Punjab, and Lahore is our headquarter. Karachi आने का मकसद ये है because we haven't officially launched in Karachi, so we want to understand the landscape of how Karachi operates, how the consumer operates. So moving quickly. So और हमने जो कुछ भी सीखा इन सब से वो अपनी 2 साल की इस जर्नी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. लॉजिस्टिक्स की जर्नी पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट आई वांट टू बी माइंडफुल ऑफ द टाइम, एंड सो आई जस्ट से दिस कि लास्ट माइल डिलीवरी जो हमारे एक्चुअल बिजनेस है वो ई कॉमर्स, जो फैशन, रिटेल, अपैरल, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स, हम उनको डील करते हैं. तो अगर आप ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, अगर आप ऑनलाइन जूते खरीदते हैं, आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी एसेसरी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो we deliver that product for you, at least if you are in Lahore, particularly in Lahore in Punjab. And we now have 400 plus team members. My HR manager is sitting over there, and because अभी Women's Day भी था और ये हमारी टीम है जिसको आप नहीं देख पा रहे, but we're very proud of them. Women's Day था, उसके हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि we've made sure that we employ at least 30% managerial leadership roles in our team. So at least all our managers, we ensure that there's 30% females. ये हमारा मॉडल है क्विकली कि हम क्यों मार्केट में आए और हमने क्या ऐसी चीज़ एड्रेस की जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस नहीं कर पा रहे थे. तो जो एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक्स बिजनेस थे उनमें से जो पेन पॉइंट था कस्टमर्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी वो ये था कि 50-50, 60-60 दिन, 3-3 महीने तक भी बहुत सारी कंपनीज़ को अपने पैसे वापस नहीं मिलते थे. और ये SMEs के लिए तो एक बहुत डेंजरस बात थी, इसलिए बहुत सारे जिसको आप मॉम एंड पॉप स्टोर्स कहते हैं वो तो बंद हो जाते थे. तो वी सॉर्ट ऑफ डिफाइन दैट प्रॉब्लम एंड मेड श्योर कि अगर हम इन बिजनेसेस को जल्दी पैसे वापस करें तो इनका वर्किंग कैपिटल वुड बी इंश्योर्ड. जिस बिजनेस का भी वर्किंग कैपिटल इंश्योर होगा वो बिजनेस चलता रहेगा. सो इसी ये जो अभी अगर आप नई फिगर्स देखें ई कॉमर्स के हवाले से जो काफ़ी आ रही हैं आजकल, पाशा ने भी लॉन्च किए हैं, तो उस हवाले से देखें तो 30 से 60% का ग्रोथ रेट आ रहा है ऑनलाइन कॉमर्स के ऊपर. उन सारों के पीछे लॉजिस्टिक्स कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितनी जल्दी डिलीवरी होगी उतनी ही जल्दी पैसा बिजनेस को वापस जाएगा. So I think we take pride in shifting the entire logistics industry का behavior, because when we did it, we made sure that everybody else did it. एक और चीज़ जो किसी और ने नहीं की थी, जो हमें करनी पड़ी, और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि बिजनेसेस को ये पता नहीं चलता था कि राइडर्स की ट्रैकिंग हो, कैसे हम ये पता कर पाएँ कि राइडर एक्चुअली आपके घर
पार्सल देने आया भी था या नहीं था. So what is the way of doing that? So we started geo fencing all the riders and how making sure कि ये जो deliveries हैं हम track कर सकें कि ये rider actually आपके घर आया था, उसने actually attempt किया था, because उससे पहले कोई तरीका नहीं था ये find out करने का. फिर एक और चीज़ पेमेंट्स के हवाले से मैंने आपको बात की, ये जो सारे इनमें से जो अकाउंट मैनेजर्स ख़ास तौर पे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अंदर ये कहीं देखा नहीं जाता था कि सेल्स के अलावा भी कोई छोटे स्टोर्स की बात सुन रहा है या उनकी बेसिकली कोई भी जो ई कॉमर्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर रहा है. सो वी सॉर्ट ऑफ हेल्प्ड देम एंड विच रियली एम्पलीफाइड आवर बिजनेस इन कोविड. आई थिंक ये वो 2-3 चीज़ें थी. ये पूरा हमारा बिजनेस साइकिल है. अगर आप एक SME है तो वी इंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस. और हमारा गोल ये है कि हम सिर्फ खाली एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ना जाने जाएं, हम इवेंचुअली आपके लिए एक वन स्टॉप शॉप हों. सो इफ़ यू टुमारो वांट टू स्टार्ट बिजनेस, we provide everything from you, from website till delivery. And this is our growth curve. We actually started from 8 people, not 15. And mashallah, now in 2 years, we're at 400 plus. And our rider and fleet is about 1,000 to 1,500 people, depending on the season. And so we take pride in all of that. This is where we're currently serving. And these are all the brands that we're working with. So thank you so much for listening to me. And inshallah, from next week onwards, we're also going to be launching upfront payments, making sure, again, on the working capital part. And I look forward to seeing more of SMEs in Pakistan and more on fashion and retail. Thank you. Thank you, Sana. Wonderful. Thank you very much. ये थी सना और now next is Zain Farooq. So I'd like Zain to come to the rostrum and give your presentation. Please, welcome. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much honorable guests and Khurram Saab for inviting us. I thank the Management Association of Pakistan for letting us fly from all the way from Lahore. Though we are right now, a part of my team is attending the ITCN that is happening at the Expo in Lahore. Okay, so मैं यहाँ पे उन 9 करोड़ लोगों की बात करने आया हूँ जो डेटा का पार्ट नहीं है. It's 2022, यहाँ पे बात होती है डेटा प्रोटेक्शन की. ये 9 करोड़ वो लोग हैं जो डेटा का पार्ट ही नहीं है. आपको कैसा लगे अगर आप 25,000 रुपया महीना कमाते हैं और 20 साल ये 25,000 रुपया महीना कमाने के बाद आप मोबाइल टॉपअप्स भी करवाते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने लिए बिजली के बिल पे करते हैं, बच्चों की फीसें पे करते हैं और आप बैंक जाते हैं. बैंक का फंक्शन है पैसे लेंड करना, क्योंकि बैंक का प्रोडक्ट पैसा है. जिस तरह रेंट पे जो गाड़ी देता है उसका प्रोडक्ट गाड़ी होता है. और बैंक के पास आप पैसा लेने जाते हैं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और बैंक कहता है आप एग्जिस्ट ही नहीं करते. हाउ वुड यू फील? इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए माई टीम बना. So what we are doing, we are delivering access to finance for a common man in Pakistan. And how are we doing it? We think the banking is broken. Broken is service के लिहाज से नहीं, reachability के लिहाज से. We are talking about a country, 3rd largest youngest population in the world, 119 million, जिसमें से 7.5 करोड़ लोग आपके देहातों में रहते हैं. जितने फिनटेक्स आते हैं सारे टॉप टियर, टॉप ऑफ द पिरामिड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. गुड, वी आर डूइंग द सेम एज वेल, बट द रियल ट्रांजैक्शन इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड आई शो यू दैट इन अ व्हाइल. पाकिस्तान में हर 14,000 लोगों के लिए एक बैंक ब्रांच मौजूद है और 14,500 लोगों के लिए एक ATM. A lot of people never get to use an ATM in their whole life or even get to visit a branch in their whole life. 188 million tele-density, 107 million people having access to internet services. Financial services formally कितनों के पास accessible है? 23%. ये facts, ये स्टेट बैंक के facts हैं जो कि प्रॉब्लम है और इनको सॉल्व करने के लिए हमने एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन निकाला. हमने माईटीएम दुकान बनाई. माईटीएम दुकान, व्हाट डज इट डू? माईटीएम दुकान पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपका अकाउंट ओपन कर सकता है, टॉप अप बेच सकता है, आपकी बस, एयर टिकट, जहाज की टिकट,
कैश इन कैश आउट, लोन एप्लीकेशन, आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन की रिपेमेंट कर सकते हैं, बहुत कॉमन सर्विसेज है. लेकिन पाकिस्तान में एक्विजिशन का बिजनेस रिस्की बिजनेस है. रीजन, शॉप्स के पास पैसे नहीं होते. यू डोंट हैव कैश रिच एजेंट्स. दैट इज व्हाई वी ब्रॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूल स्टेशंस. वी हैव साइंड अप विद 23 OMCs रिसेंटली. हमने ओमनी प्रेजेंस की बात की. If you are our customer, you don't need to download our app to be our customer. आप हमारी दुकान पे जाएं, वहां पे अपना फोन नंबर या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें ट्रांजैक्शन के साथ. जिस दिन आपको लगे कि आपको माइटीएम यूजर ऐप की जरूरत है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने हमारी दुकानों पे की होंगी, वी आर यूजिंग अंडरराइटिंग इंजन्स टू ब्रिंग ऑल दिस बैक टू द ऐप, ताकि आपको पता लग सके कि आपने पिछले 6 महीने में या 3 महीने में कितने की टिकट ली, कितने का टॉपअप किया, कितना पैसा कैश इन किया, कितना कैश आउट किया. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है क्वालिफाइड लीड्स बैंक्स के लिए. वो वर्थ निकाल सकती हैं एटलीस्ट इन ट्रांजैक्शन से कि इस आदमी को कितने पैसों का एतबार किया जा सकता है. बात एतबार की है. पाकिस्तान में आज तक 34 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए हैं, 16 लाख एक्टिव है, 12 करोड़ एडल्ट्स हैं. 16 लाख, मेरे पास 5 है. आई एम श्योर आप सबके पास भी 2-2, 3-3 तो होंगे. हम इस हॉल में बैठे हैं जहां पे 300 क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी. हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है. दुकानदार डॉक्यूमेंटेड कमाता है. अगर दुकानदार रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तो वो जो वैल्यू एडेड इनकम के 10 या 20 रुपए कमाता है, हम उसका 12% अदा करते हैं. अगर वो टैक्स पेयर नहीं है तो हम 24% अदा करते हैं, जिसके एवज हम दुकानदार से रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं और सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, जो बहुत मिनिमल है, पूरे साल का 1500. दैट्स हाउ वी एक्टिवेट. और हम प्री फंडेड अकाउंट्स पे चलते हैं, ऑफ कोर्स, जीरो डेट मॉडल. We have a team of 53 people. I am a doctor by profession. I worked with the WHO. Cancer का डॉक्टर हूँ मैं. I was in China for 14 years. I have seen WeChat evolving. I've seen Alipay evolving. I had to go back to school to reskill myself as an entrepreneur. I am a seasoned founder, recognized by the Founder Institute, by the National Incubation Center, by all the platforms in Pakistan. I've been everywhere. 30 months it took us to raise and to win this. For this 3-minute pitch at the GITEX Future Stars, I really practiced 30 hours. And that's what you have to do, because I am not an Ivy League graduate, but I am trying to break a stereotype here with Mightium as a product where we are trying to bring a change in a common man's life. And I am thankful to all the big organizations who have supported us, even the NRSP Islamic Microfinance Bank, who is our partner bank as well at the moment, and Settlement Bank as well. And recently we have raised $6.9 million, and all of them are the first time investors in Pakistan. They're from Saudi Arabia, they're from Pakistan, they're from Canada, they're from all over the world. One of them is a Tokyo stock listed company called Rentrax. We believe that competition is one part, but collaborations are more important than competition, because it's an ecosystem. It's all about an ecosystem. ये मेरी बहुत ही फजूल सी और नॉर्मल सी स्लाइड है. You can see it's like even the pixels are not perfect. And that's what's wrong with the system that we are trying to identify. $260 billion की इकोनॉमी, 50 अरब डॉलर कैश की फॉर्म में मार्केट में रोटेट कर रहा है. और पूरे पाकिस्तान में 21 कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं. सिर्फ 21 कैश डिपॉजिट मशीन्स. लोग कहां पैसे जमा करवाएं? बैंक 9 to 5 है. पिछले महीने टेलीनॉर का एक स्टैट्स आ रहे थे, 49 बिलियन रुपीस डिपॉजिट हुए. इमेजिन करें. पीपल वांट टू अडॉप्ट बैंकिंग and the government is working on it. We just want to facilitate more. We want to be a part of this. A shopkeeper is making good money. We can actually support the SMEs if we can promote this business. And a lot of banks are now coming into the acquisition business, which is encouraging, because this market is huge. We're talking about 2 million registered retailers. ये हमारा roadmap है, and at present we are going to be launching on the 31st of March our beta, and on 9th May, inshallah, we will be launching in Karachi and 35 more cities. Thank you very much.
Thank you, Zain, and you've said an excellent line, which is basically ज़माना जो है collaboration का है, competition का नहीं है. This is a hard-hitting line, which needs to be followed by all new generation, new startups, new ecosystems. It's about collaboration, not competition. तभी आप grow करते हैं मिलके. So thank you very much, Zain, for this wonderful presentation. Now, next in line is, of course, the healthcare startup founded by Bilal Amjad. Bilal, अपनी आप वीडियो रन करेंगे. परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आइए हम आपको दिखाते हैं. मुल्क में एक बड़ी तादाद में गैर मुस्तनद तिब्बी अमला काम कर रहा है. मरीज होने के नाते किसी मुस्तनद डॉक्टर, लैब या फार्मेसी का पता लगाना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हर तिब्बी अमला मुस्तनद और पायदार नहीं होता. अगला चैलेंज तब दरपेश आता है जब आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है और औसतन 40 से 60 मिनट का इंतजार मरीज को मायूस कर देता है. आखिरकार मर्ज की तशखीस के बाद दवाओं के हुसूल के लिए फार्मेसी या तशखीसी टेस्टों के लिए लैब ढूंढना भी एक इंतहाई मुशक्कत वाला काम है. एक मरीज के लिए ये तकलीफ दह मरहला होता है जिसमें उसके कम अज कम 4 घंटों की मेहनत लगती है और औसतन 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं. यही वजह है कि 10 करोड़ से जायद पाकिस्तानी मयारी तिब्बी खिदमात के हुसूल से मायूस हो चुके हैं. इंस्टा केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मयारी सेहत का हुसूल सबके लिए मुमकिन बनाता है. ये आपकी हजारों तिब्बी खिदमात के हुसूल में मदद करता है, जिसमें वीडियो कंसल्टेशन, क्लिनिकल अपॉइंटमेंट, वैक्सीन, बीमारियों का हल, दवाएं और लैब टेस्ट वगैरह शामिल हैं. ये तरीका इतना आसान है कि आपको सिर्फ www.instacare.pk पर जाना है या इंस्टाकेयर ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करनी है, ताकि आप अपने करीबी तिब्बी खिदमात के हुसूल को आसानी से मुमकिन बना सकें. तो यही वक्त है कि आप इंस्टाकेयर ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इंस्टाकेयर ऐप आपकी सेहत में आपका मुआविन है. You'd like to say something about it? Tell us your journey, और बताएं. By the way, मैं ये बता दूं कि this is the only startup in the healthcare in Pakistan that which has a very high profile advisory board, और उसमें बहुत अच्छे बड़े नाम हैं, और उसमें डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं. जावेद अकरम साहब जो डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो बेसिकली अथॉरिटी हैं पाकिस्तान में हेल्थ केयर में, वो एक वाहिद स्टार्टअप के बोर्ड पे हैं और वो इंस्टा केयर है. एंड सेकेंडली इन्होंने 18,000 डॉक्टर्स को जो है वो ऑन बोर्ड किया है. बेसिकली इनका बेसिक मॉडल है जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनको स्मार्ट करना. और ये बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है. तो इन्होंने 18,000 डॉक्टर्स को ऑनबोर्ड किया है, जिन्होंने 4 मिलियन पेशेंट्स, 4 मिलियन पेशेंट्स को सर्व भी किया है. That's something big for a startup like Instacare, at least in Pakistan. So this is something big that they've already achieved, mashallah sir. So would you like to say something about it? Yeah, sure. Assalamu alaikum everyone. I'm Bilal Amjad. So अभी जो हम वीडियो देख रहे थे, that was focusing on more on B2C side, यानी पेशेंट्स की एंड पे कर रहे थे. लेकिन जब हम लोगों ने Instacare बनाया बेसिकली, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको हम सॉल्व करना चाहते थे, एंड दैट वाज डेफिनेटली नॉट फाइंडिंग अ डॉक्टर. क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं डॉक्टर ढूंढना इज़ नॉट दैट मच अ प्रॉब्लम, बिकॉज हर स्ट्रीट में, रोड साइड पे आपको डॉक्टर्स के क्लिनिक्स मिलते थे. लेकिन डॉक्टर्स की ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर 1 लाख के करीब एक्टिव डॉक्टर्स हैं जो लाइसेंस्ड हैं, जबकि ओवर 500,000 क्वैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो इस मुल्क में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक और सर्टिफाइड डॉक्टर्स की वाकई बहुत कमी है. सो ये चीज़ मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा फील होती है, बिकॉज बैक इन 2007 आई लॉस्ट माई ग्रैंड फादर एक्चुअली बिकॉज ऑफ अ मेडिकेशन एरर, और जो कि जिसने मुझे पुश किया टू फॉर्म इंस्टाकेयर. और इसको अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हाउ बिग इज़ द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम मुझे इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर का जो एक अटेंशन स्पैन है वो रीजन के अंदर हमारे मुल्क का सबसे कम अटेंशन स्पैन है. लाइक इंडिया के अंदर 2.3 मिनट्स है, जो कि
بہت کم ہے ان کا بھی. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, وہاں پر ڈاکٹر پیشنٹ کا جو اٹینشن اسپین ہے دیٹ از 21 منٹس, سنگاپور میں 9 منٹس ہے. اینڈ امیجن کہ پاکستان کے اندر اٹس جسٹ 1 منٹ, کہ 1 منٹ کے اندر ڈاکٹر آپ کو کیا اس نے آپ کو ڈائگنوز کرنا ہے, کیا اس نے آپ کی ایگزامینیشن کرنی ہے, اینڈ ہینس جو رزلٹ نکلتا ہے وہ میڈیکیشن ایررز نکلتے ہیں. اور پھر میڈیکیشن ایررز اتنی بڑی ایک کریٹیکل پرابلم ہماری بن گئی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سال 1 ملین کے قریب لوگوں کی وفات ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف میڈیکیشن ایرر. اور بہت سارے ایسے ابھی پیشنٹس رہ جاتے ہیں جو اپاہج ہو جاتے ہیں, جن کو پھر میڈیسنس کی اگر ریئیکشن ہو جائیں تو ان کے کڈنیز یا ادر آرگنس پہ افیکٹ کر جاتے ہیں. تو اٹس اے میسو پرابلم, اور یہ پرابلم صرف پاکستان کی نہیں, اٹس اے گلوبل پرابلم. یو ایس کے اندر اوور 0.2 ملین کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں میڈیکیشن ایرر کی وجہ سے ہونے والی ڈیتھس کے. کینیڈا کے اندر 30,000 ہیں. اور اف وی ٹاک اباؤٹ یونائٹیڈ کنگڈم تو این ایچ ایس کے اندر اوور 238,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں لاسٹ ایئر میں. سو یہ ایک گلوبل پرابلم ہے. اور ابھی میں ان کنٹریز کا مینشن کر رہا ہوں جو ڈیجیٹائزڈ ہیں, جن کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, جہاں ہیلتھ کیئر سینٹرلائزڈ اور ڈیجیٹل فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سو امیجن کہ جو پاکستان کا ایک ڈاکومنٹڈ نمبر ہے کہ 1 ملین کے قریب ہمارے میڈیکیشن ایرر کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں, وہ ایکچولی میں کتنا بڑا ہوگا. یہ تو بس ابھی رپورٹ کیا گیا کچھ پبلیکیشنز میں. سو اس وجہ سے پھر یہ انسٹا کیئر جیسے جو جس طرح میرا انسٹا کیئر اسٹارٹ اپ ہے, اس کی نیڈ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں, کیونکہ ہماری گورنمنٹس نے بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ہے ہیلتھ کیئر کو, خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو. تو دس از دا ٹائم کہ پھر ہم نے انسٹا کیئر فاؤنڈ کیا, اور ہم لوگوں کا ویژن ہے کہ وی نیڈ ٹو یوز انفارمیشن ٹیکنالوجی, وی نیڈ ٹو لیوریج انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹو ڈرائیو سیکیور اینڈ سیف ہیلتھ کیئر ایکسپیرینس فار ایوری پاکستانی. So this is what InstaCare is doing. Thank you very much. Thank you. Last but not the least, again, our scientist, Mr. Bilal Siddiqui, Dr. Bilal Siddiqui. Dr. Sahab, you'd like to play the video first? And almost nothing in life is worth anything without taking any risk. And when you're inspired by life itself, willing to take those risks, then there is absolutely nothing stopping you from taking off. When you have a will to bring a change, then sky is the only limit. And the land will start revealing its secrets. When you take control, and the world is yours to conquer. But there's always a humble beginning. There's always a foundation to be laid. And when you're on the right track, right people will join you. Will take your side and cover up the gaps. Thank you. ایک اور I'd like to play another video. ویسے میں آپ کو اس میں نظر آیا ہوں گا, لیکن میں آپ کو بتا چلو I've been honored, I've been part of this venture also. So اس لیے مجھے بھی آپ نے دیکھا اس میں. لیکن ہمارے فاؤنڈر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, جو اس پورے ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپ کو لیڈ کر رہے ہیں, اینڈ گلوبل لیول پہ they are making headlines. آپ یہ بھی دیکھیں گے ابھی کہ فرسٹ فوڈ ڈلیوری تھرو ڈرونز جو اس پورے ریجن میں ہوئی ہے, that's been done by WooTech and led by Dr. Bilal. I've sort of been in Pakistan now for 10 years. I've been outside the country also taught at IOBM in the mechatronics department. So I have been in industry, I've been also in the academia, and I've also served at Pakistan Air Force as chief engineer. Drones department mein jaise zikr bhi kiya tha ki we made the first jet drone of Pakistan, completely indigenous, sare subsystems, and that's in service with the Air Force. Iske alawa, when we started this company around a year back, we found the niche. The niche is that jitne bhi drones is waqt
हैं दुनिया के अंदर वो बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर हैं. एक कैटेगरी वो है जो कि जिसके पर होते हैं या विंग्स होते हैं, and then there is a motor or a jet engine which pushes it forward. So the wings create most of the lift. The other drone is what is known as drone in general parlance, which is उसके 4 पंखे हैं और they take off like this and move like a helicopter. So the niche that we found out was कि इन दोनों की अपने अपने यूज केसेस हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से इनकी यूटिलिटी बहुत लिमिट हो जाती है. तो what we decided to do was to make a hybrid of them, a drone which can take off vertically, land vertically, does not need a runway, and can have the same efficiency as a fixed wing drone. So that is where the idea came from. It was the first VTOL or vertical takeoff landing drone was made in the world in around 2010 or commercially in 2010, and we were able to do that in Pakistan in 2021. Alhamdulillah, we are the only ones manufacturing these drones in this entire region, which includes India, Pakistan, and the Middle East. So we got good traction. We're able to export also, Alhamdulillah. Also now in talks with certain countries in the Middle East for export of drones, and we are actively actually engaged in some projects abroad in bringing this technology over there. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Can you have this video done now? Just fine. Thank you. So ये तो presentation थी, brief. We'd like to start our interactive session now. So I'll start from Bilal first. Bilal, थोड़ा सा अपना जर्नी बताएं कि gravity of the situation क्या है इस वक्त और आपने क्यों इस स्टार्टअप को शुरू किया और आज आप कहाँ खड़े हैं? Okay, so well, in 2017, I was working for a tech giant, or one of my role was to find out opportunities for my employer कि हम वहाँ पर digital transformation enable कर सकें. और हमने उसमें telcos के साथ काम किया, banks के साथ काम किया, IT companies के साथ काम किया, मतलब बहुत diverse इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे थे. लेकिन हमने जब हेल्थ केयर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि हमारी कोई एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं थी कि जो वहाँ पर फिट हो सके. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग 3 टेक कंपनीज, उनकी बात कर रहा हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट भी हेल्थ टेक फोकस्ड नहीं थी. और पाकिस्तान के अंदर इवन 2022 के अंदर भी लेस देन 1% मार्केट जो है वो डिजिटाइज्ड है. सो इट्स that much of an opportunity. लेकिन उसके साथ साथ ही देखें तो इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम भी है कि हम लोग डिजिटाइज नहीं हैं. अब डिजिटाइजेशन ना होने की वजह से मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि मसला कहाँ पर आता है. मसला यहाँ पर आता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, मैं एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ. अल्टीमेटली हम सब ने जाके ट्रीटमेंट उसी से लेना है. अब जब डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा आपके लिए, तो पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है. सो यहाँ पर क्वैकरी भी प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ पर लाइसेंस डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ पर MBBS भी हैं, स्पेशलाइज्ड भी हैं, लेकिन इवन दो उनकी भी कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है. सो फॉर एग्जांपल अगर खुरम और मैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर सेम प्रॉब्लम कि हमें बुखार है फॉर एग्जांपल, डॉक्टर उसकी कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा और उसके हम दोनों को बहुत सारे चांसेस हैं कि वो एक जैसी मेडिकेशन दे देगा. अब हो सकता है वो खुरम के लिए ठीक हो, लेकिन मेरे लिए वो हो सकता है मेरे बुखार की रीज़न, उसकी अकरेंस, उसकी जो भी वजूहात थी होने की वो डिफरेंट हो सकती हैं.
اس وجہ سے وہ اس کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ میرے اوپر ریئیکٹ کر سکتی ہے. اب وہ باڈی پہ بھی کر سکتی ہے, وہ سائیکولوجیکلی بھی کر سکتی ہے. کیمیکلس کے ریئیکشن بہت بھیانک ہوتے ہیں, یہاں تک کہ جان لیوا ہوتے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے جب وہ پرسکرپشن پرسکرائب کرتا ہے تو ہیومن مائنڈ اتنی چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا جتنی ایک میڈیسن دینے کے وقت ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سو فار ایگزامپل 2 میڈیسنس کا اگر آپس میں کوئی ریئیکشن ہونے والا ہے, کچھ سالٹس آپس میں ریئیکٹ کرنے لگے ہیں, سو ڈاکٹر کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہ آپ کو 4-5 دوائیاں جب پرسکرائب کرے گا تو اس میں سے کوئی ریئیکشن بھی ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمیں نیوز میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت سے یہ ہو گیا, میڈیسنز غلط دے دی گئی, جو بھی وٹ ایور ریزنز آر. تو اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں. پھر کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جو ہم خاص میڈیکل کنڈیشن کے لوگوں کو نہیں دے سکتے. کسی کو کوئی الرجی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, آپ ان کو کچھ خاص سالٹس نہیں دے سکتے. تو ڈاکٹر پاکستان میں اس پریکٹس کو بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. پھر اس کے علاوہ اس طرح کی انٹریکشن بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہیں. تو اب پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ ہماری جو ڈائگنوسس ایکوریسی ہے ڈاکٹرس کی وہ بالکل بھی نہیں ہے. سو لائک وہ آپ اپنے گٹ فیل کے اوپر جا کر آپ کو میڈیسنس پرسکرائب کر رہے ہیں جو ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس چلتی ہے. تو یہ پرابلم ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے, جس طرح میں ابھی پہلے مینشن کر رہا تھا کہ ابھی پاکستان کے اندر جو ڈاکیومنٹڈ نمبر ہے وہ 1 ملین ڈیتھس کا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائفز, ہیومن لائفز, کہ ہم ہر سال 1 ملین لائفز ہماری اس لیے جاتی ہیں کہ میڈیکل ایررز تھے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی پوری زندگی خراب ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ایک غلط میڈیسنس کی وجہ سے وہ یا تو نابینا ہو چکے ہیں یا ان کے ہاتھ کاٹنے پڑ گئے, ٹانگیں کاٹنی پڑ گئی. سو دس از ہاؤ کریٹیکل دیٹ پرابلم از. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر خود بھی اتنا ڈسپلنڈ نہیں ہے, اتنا زیادہ برڈنڈ ہے کہ وہ مریض کو وہ کوالٹی نہیں امپارٹ کر پا رہا جو اسے کرنی چاہیے, رائٹ. اور دوسرا یہ کہ ایک اور فیکٹ یہ ہے کہ یہاں ایک ڈاکٹر پہ 1300 مریض آتے ہیں, ایک ڈاکٹر پہ 1300 مریض آتے ہیں. یہ بیسکلی اسی لیے ہے کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے, ہاسپٹلس اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پاتے, مریض بہت ہے, ڈاکٹرس کم ہے ریلیٹیولی. تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو میرا سیم کوشچن ثنا سے ہوگا. ثنا, اف یو ٹیل اس اباؤٹ یور جرنی, کیا پرابلم تھی, کیا سالو کیا آپ نے, کیا ڈسٹرپشن ہے اس کے اندر, اس لاجسٹکس ماڈل میں ورسز ایک کنونشنل ماڈل ہے جو ہمارے جائنٹس جو ہیں وہ آلریڈی مارکیٹ میں 30 سال سے ہیں, اس میں کیا فرق ہے, کیا پرابلم سالو کر رہے ہیں, کیا ایشوز کیا ہیں؟ تھینک یو خرم. میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی یہ بات ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ کچھ چیزیں جو کنونشنل بزنس میں ہو رہی تھیں جو کہ ایڈریس نہیں ہو پائی تھی, اس میں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی وہ 2 بہت بڑے پرابلمس تھے. ایک یہ کہ بزنسز کو اپنے پیسے بہت لیٹ واپس ملتے ہیں. کسی بھی بزنس کے لیے یہ ایک بہت بڑی پرابلم, اور مائکرو انٹرپرینور کے لیے, اسمال بزنسز کے لیے خاص طور پہ اٹس بیسکلی یو کلنگ دیم. So by not prioritizing them. So that was a very big market to capture, in the sense that we had to ensure that if I was a small business, I am getting paid in time. So we made sure that we actually started giving cash back in 1 or 2 days. And now the industry practice is کہ پہلے جو 50 دن میں لوگوں کو پیمنٹ ہوتی تھی, اب ہم میک شور کرتے. I think we do want to take credit کہ ہم سب لوگ کم از کم 1 ہفتے میں پیسے ضرور دے دیتے ہیں. So I really do think that we've pushed industry standard on that, number 1. دوسری جو چیز جو اس کا بھی ذکر میں نے اپنی پریزنٹیشن میں کیا تھا, which is very important, that in conventional business there is no way you can check that did the rider actually go and attempt. جب تک آپ یہ اس کا ٹریک ہی نہیں رکھ پائیں گے, آپ مجھے یہ کیسے ایز اے بزنس سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ لک یو نو یور ریٹرن ریٹس آر اے سرٹن ریشو. تو وی ہیڈ ٹو انشور دیٹ, اس لیے ہم نے جیو فینسنگ شروع کی رائڈر کی, کہ آپ ریئل ٹائم ٹریکنگ کر لیں, آپ دیکھ لیں کہ آپ کا رائڈر کتنی دفعہ گیا ہے. پھر ہم سب جب آن لائن آرڈر کرتے ہیں, اور یہ آڈینس بھی جانتی ہے, اکثر لوگ تو گھر پہ ہی نہیں ہوتے. جب وہ گھر پہ نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں یار کل آ جانا, کل نہیں تم پرسوں آ جانا. اب یہ ایک ری اٹیمپٹ ہوگی, پھر دوسری ری اٹیمپٹ ہوگی, یار ابھی بھی میں گھر نہیں ہوں, تم شام کو 5 نہیں 5:30 بجے آ جاؤ, تیسری ری اٹیمپٹ ہوگی. اب اگر آپ ایک ٹیک انیبلڈ کمپنی نہیں ہیں تو دیر از نو وے دا رائڈر از گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو آفٹر the first attempt. He is going to say sir وہ ہوتے کر ہی نہیں سر, بس گل ختم. So we had to make sure that we push the industry standard on that also. So again we did take pride in that everybody is, I think,
started to do that now. یہ وہ دو بہت بیسک چیزیں ہیں جو before starting we reached out to our conventional businesses hoping that they would listen to us, but when they didn't, then we thought maybe that's the problem we should actually be solving, and it did help us. Great to have these insights. اور یہ ایکچوئل ریئل پرابلمس ہیں, آن گراؤنڈ پرابلمس ہیں جو کہ ایک وینڈر کو بھی جو ہے وہ فیس وہ بھی کر رہا ہے, پلس جو کسٹمر ہے اس کو بھی سرٹن جو ہے کوالٹی ایشوز ہیں, اور ڈلیوری آن ٹائم والا بھی بڑا مسئلہ, لاسٹ والی ڈلیوری کا بڑا ایشو ہمارے پاس رہا ہے, اس کو آپ لوگوں نے, اور جو بھی نئے لاجسٹکس کمپنیز ہیں وہ لاسٹ مائل پہ بڑا کام کر رہی ہیں جو کہ جو بڑی کنوینشنل کمپنیز تھی وہ نہیں کر رہی تھی, تو یہ بہت بڑا گیپ تھا جو آپ لوگوں نے آ کے پورا کیا ہے. زبردست. زین آپ بتائیں کہ کیا آپ کو ایسا, آپ نے کیوں یہ شروع کیا؟ We all know there's a huge undocumented, the share of undocumented economy is huge. That's that runs in multi-billions of dollars. کوئی کہتا ہے $70 ارب کا ہے, کوئی کہتا ہے $100 ارب ہے. رفلی اگر $100 ارب بھی آپ لگا لیں کہ آپ کی undocumented market ہے, so that's a huge potential to tap actually. So آپ پرابلم کیا سالو کر رہے ہیں اور آپ کو کیا سوچا یہ شروع کرنے کے لیے؟ اچھا, میں اسٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ پنجابی کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ میں ایک شعر سے اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. اوکے. نظراں دی رکھوالی رکھ, اینک پاویں کالی رکھ. نظراں دی رکھوالی رکھ, اینک پاویں کالی رکھ. اکو یار نال یاری لا, دشمن پاویں 40 رکھ. کیا بات ہے. اکو یار نال یاری لا, دشمن پاویں 40 رکھ. ایباں اتے پردہ پا, ایباں اتے پردہ پا, پیالی اتے پیالی رکھ. جگ دیندا مثالاں لوکاں دیاں, جگ دیندا مثالاں لوکاں دیاں, تو اپنا آپ مثالی رکھ. زبردست زبردست, ایکسلنٹ ایکسلنٹ. بیسیکلی مجھے دیکھ کے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے پنجابی نہیں آتی ہوگی, اردو بھی نہیں آتی ہوگی. کئی لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں تو پہلے آپ سے ملا تو مجھے یہ بھی لگا کہ آپ کو شاید انٹرپرینور آپ کیسے بن گئے, آپ تو آن کالجز ہیں بیسکلی, یہ ڈاکٹر ہیں, اینڈ ہی وینٹ بیک آل دا وے ٹو اسکول ٹو ری اسکل ہمسیلف اینڈ کیم بیک ایز این انٹرپرینور, یہ اسٹارٹ کر کے اور اچیو بھی کیا ہے ماشاءاللہ سے. یہ بہت بڑی بات ہے. مطلب اگر مائی ٹیم نہیں بھی چلتا تو میں چائنیز ٹرانسلیٹر کی بڑی اچھی جاب کر سکتا ہوں پاکستان میں. میں جب پاکستان آیا, آپ نے جو مارکیٹ کی بات کی, پاکستان کے اندر جو انسان باہر رہ کے آتا ہے, میں اپنے آپ کو واپستانی کہتا ہوں, میں پاکستانی نہیں کہتا. I use that term for myself. 14 years you come back into the system. پرابلم لوگوں کا بھی نہیں ہے, پرابلم بینکنگ سسٹم کا نہیں ہے, پرابلم ہے کنیکٹ نہیں کر پا رہے برج کو. وی آر رائٹ ناؤ ڈیجیٹائزنگ ایٹ اے فینومینل اسپیڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم دنیا سے تھوڑا سا شاید سلو ہیں, لیکن پاکستان کی آپ منتھ آن منتھ گروتھ دیکھیں, آپ 1 لنک کی ٹرانزیکشنز دیکھیں, 5 لاکھ پر ڈے پہ چلے گئے, پلس جا رہے ہیں, 1 ملین کو بھی ٹچ کر جائیں گے. $260 بلین کی اکانومی پہ اکانومی میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. 2011 میں نہیں 2009 میں انڈونیشیا کی اکانومی 209 بلین, آج ہم $300 بلین کی اکانومی ہیں. ہاں, $300 بلین. ہاں, اب تو ہم $300 بلین ہو گئے ماشاء اللہ. امپورٹس ہیں, ایکسپورٹس ہیں. لیکن جو عام آدمی ہے ایک بات سے گھبراتا ہے کہ بینک انٹرسٹ, یہ کچھ لفظ ہیں, بینکنگ از ٹف. I agree to that because I had to learn banking, financing. Oncology شاید آسان ہے, ڈاکٹری آسان ہے, because the patient cannot challenge you. Here you have authorities to challenge you. The State Bank will challenge you, the FBR will challenge you, the National Tax Authorities will challenge you. You have to stay in your limits, in your ecosystems. میڈیسن میں یہ نہیں ہوتا. میڈیسن میں آپ نے پریکٹس کی, جس طرح انہوں نے کہا بلال نے, غلطی ہو گئی ڈاکٹر کی, پیشنٹ گیا, کوئی بات نہیں, اب اللہ کی مرضی تھی. یہاں پہ مرضی نہیں چلتی, یہاں سسٹم چلتا ہے. اور اس سسٹم کے اندر میرے جیسے انٹرپرینور کو اپنی ٹیم کے ساتھ آنے کے لیے بہت بہت ہیلپ ملی بڑے انسٹیٹیوشن کے لوگوں کی, جنہوں نے بے لوس میری مدد کی. میں شکر گزار ہوں, خرم صاحب آپ ان میں سے ایک ہیں. میں شکر گزار ہوں بینکنگ انڈسٹری کا, جنہوں نے اجازت دی کہ یس اسٹیپ ان اینڈ شو اس واٹ یو کین ڈو. لیکن کاروبار پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. ایون بینکس بھی پیسہ چاہیے نا, بیکاز
ہم لوگ ایک ایسے کانسیپٹ میں آ رہے تھے جس کے اندر لوگ تیار نہیں ہیں پیسے بینک میں رکھوانے کے لیے. انہوں نے اپنے تکیے بھرے ہوئے ہیں, ان کی الماریوں میں پیسہ پڑا ہوا ہے, ان کے میرے نا ارے کا مسئلہ ہے تو اس لیے ڈونٹ مائنڈ دیٹ, ان کے جو ہے یہ گدوں میں اور لائک میٹریسز میں پیسے ہوں گے شاید, یہ بہت بات کی جاتی ہے. لیکن آپ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ $60 بلین مائکرو فائنانس اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے, سوری روپیز, زیادہ بول گیا, 60 بلین روپیز مائکرو فائنانس اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے. یہ 32 ملین اکاؤنٹس ہیں, اور یہ میں آپ کو اسٹارٹ بھی تھوڑے پرانے ہی بتا رہا ہوں, نئے تو بہت زیادہ ہوں گے. اس وقت آپ کے پاس 4,22,000 پوائنٹس ہیں پورے پاکستان میں جو مائکرو فائنانس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ایکٹیو کتنے ہیں؟ 2,02,000, 50%. اب جو پرابلم آپ نے کہی, میں عام کسٹمر کو تو بعد میں جو ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کروں گا, پہلے تو دکاندار کو ہیلپ آؤٹ کروں. اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں, اس کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ میں سے کافی لوگ سوچیں گے کہ ہماری بھی دکان ہونی چاہیے. آپ کو میں 10,000 روپیہ دیتا ہوں جس کا آپ نے ٹاپ اپ بیچنا ہے, موبائل ٹاپ اپ. موبائل ٹاپ اپ بیچنے پہ مجھے ملے گا سپوز کریں جی 1.8%, میں 1.5% دکاندار کو دے دیتا ہوں. 10,000 کا میرا کوئی بھائی یا میری کوئی بھی بہن یہاں پہ بتائیں کہ 10,000 کا 1.5% کیا ہوتا ہے؟ 150 روپیہ بنتا ہے. آپ 150 روپیہ, 10,000 وہی ہے, کسٹمر نے 10,000 کا آپ سے ٹاپ اپ خریدا, آپ کو 150 روپیہ مل گیا. دکاندار نے 10,000 ہی انویسٹ کیا ہے, 30 دن وہ 10,000 کا ٹاپ اپ بیچتا ہے اور وہ 4,500 روپے کماتا ہے. مجھے پاکستان میں آپ کاروبار نکال کے دکھا دیں جو 45% ریٹرن دیتا ہے ایک پروڈکٹ پہ. دس از دا پاور آف فائنینشیل سروسز. سیلز ہے. بجلی کے بل پہ تو 4 روپے ہی بچتے ہیں دکاندار کو, شاید وہ بھی نہیں بچتا, بینک کو بھی اتنا ہی بچتا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی پرابلم کافی بڑی ہے اور اپرچونیٹی بھی اتنی بڑی ہے, اور آپ جیسے ایک نہیں بلکہ میرے خیال میں بہت ہونے چاہیے 7 جو کہ اس مسئلے کو حل کریں. سو تھینک یو زین فار یور انپٹ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے آپ کیا مسئلہ ریزالو کر رہے ہیں, اور یہ کیا پرابلم ہے؟ ڈرونز کس کو چاہیے؟ ڈرونز ڈیفینس کے علاوہ کیا پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں, اور یہ آپ نے کیوں بنایا, کیوں پاکستان مارکیٹ میں یہ لانچ کیا ہے, اور کیوں یہاں سے آپ لوگ مارکیٹ کو سرو کرنے کی بات کرتے ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ پرابلمز ہیں اس وقت دنیا میں کے اندر. ہم جو سروسز دے رہے ہیں ان کے اندر ون آف دیم از میپنگ اینڈ سرویئنگ آف کنسٹرکشن انڈسٹری. تو جو سروے ہم نے ایک سائٹ ایریا میں ایک سروے کیا تھا, جو سروے تقریباً 1 مہینہ لگتا ہے کرنے میں, وی ور ایبل ٹو ڈو اٹ ان اے ویکس ٹائم. سو دیٹس 75% سیونگ آن ٹائم. اسی طریقے سے ہم نے ایک ٹرکی میں پروجیکٹ کیا ابھی ریسنٹلی. ان کی جو پورٹس ہیں اس کے اندر دے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں پہ کون سی شپس جو ہیں وہ پولوشن کر رہی ہیں. تو دا ڈرونس آر سپوز ٹو گو اوور دی پورٹ, فائنڈ آؤٹ کہاں پہ اسپلیج ہو رہی ہے, کہاں پہ جو ہے وہ انجنس بلا وجہ آف ہیں, ایئر کوالٹی انڈیکس کی میپنگ کرنی ہے. اسی طریقے سے وی آر آلسو ان دی ایگریکلچرل اسپیس, جہاں پہ وی ٹیل فارمرس کہ their crop is in stress, یہاں پہ پانی نہیں ہے, یہاں پہ کھاد نہیں ہے, یہاں پہ فلاں چیز کی کمی ہے زیادتی, so their yield can increase. So this technology is very disruptive. جو چیزیں مینولی پہلے ہوتی تھی, ٹائم لگتا تھا, this whole thing is being cut short by, or the time is at least being cut short by drones. تو it's not only جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ it's only وہ والا ڈرون جس سے بم گرتے ہیں. There are many uses of drones جس کے اندر, and right now اگر ہم اپنے نیبرس میں دیکھیں, پاکستان کے نیبرس میں آپ کے انڈیا is investing a lot in technology for farmers, right, and they're also subsidizing it. And recently I think Anil Ambani said that he wants to have a drone startup for farmers. تو دی اسپیس از آؤٹ دیئر. موسٹلی جو یہاں پہ اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں ڈرونس کے اندر, دے ٹیک ڈرونس فرام آؤٹ سائڈ اور پھر اس کے اوپر سروسز دیتے ہیں. تو واٹ وی آر ڈوئنگ از میکنگ آور اون ڈرونس, کیونکہ جو ڈرونس باہر سے آتے ہیں ان کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سروس کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر گر گئے, خراب ہو گئے, وہ ویسے ہی اسمگلڈ ہوتے ہیں, تو دیر از نو وے ٹو فکس دیم. Right. Yeah. So I think that's a pain point of the industry right now. Okay, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ڈیفینس ہی نہیں ہے ایریا,
एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, यू नो वेरियस एप्लीकेशंस हैं, डिलीवरी है ऑफ कोर्स. तो देयर इज अ लॉट मोर पोटेंशियल देन व्हाट वी यूजुअली सी इन पाकिस्तान, और बियॉन्ड पाकिस्तान भी बहुत पोटेंशियल है. तो मैं आप चारों से क्विक जो है एक इनपुट लेना चाहूँगा, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कि बस आपने 5-6 सेकंड या 10 सेकंड में ये बताना है कि आपको क्या इस वक्त प्रॉब्लम है मैक्रो इकोनॉमी में, कि जो अगर आपको पॉलिसी सपोर्ट मिले तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं. तो आपके पास 10 सेकंड है बिलाल, आप प्लीज़ अगर बताना सकते हैं. आई थिंक कि प्राइवेट सेक्टर्स और स्टार्टअप्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं. ऑल वी नीड इज़ द फ्रेमवर्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, या पब्लिक साइड से हमें थोड़ी सपोर्ट चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर, और ये फ्रेमवर्क क्रिएट करने में जहाँ पर पुश किया जाए डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को टू गेट डिजिटाइज्ड. सो वो एक कैटलिस्ट साबित होगा. राइट, थैंक यू. प्लीज सना, व्हाट डू यू से अबाउट इट? सो वेरी क्विकली, अगर आप नंबर्स देखें पिछले 2-3 सालों के, ई कॉमर्स फिनोमिनली ग्रो की है और वो आगे भी करेगी. सो जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं बिजनेसेस के लिए, उनके अंदर क्लैरिटी लाना, और फिर रिटेलर्स के लिए जितने भी बिजनेसेस हैं जो क्लोथिंग, फैशन, अपैरल के अंदर है, वो इस वक्त 67% ऑनलाइन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे. तो दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड also how to work with the e-commerce logistics part. Right. Zain, over to you. सर, लोकल बैंक्स जो हमारे हैं, अगर ये एम्पावर हो जाएं या एम्पावरमेंट आप कह रहे हैं, ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, प्रिपेयर हो जाएं. अच्छा, प्रिपेयर हो जाएं कि ये समझ, ये वीसी फंडिंग, सेफ नोट्स, किस नोट्स, इसको समझ सकें. क्योंकि हमारे जब पैसे बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो स्टेट बैंक की तरफ से इशू नहीं आता, लेकिन बैंक के कंप्लायंस के इश्यूज आते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स की चेकिंग की जाती है. इन्वेस्टर्स कहते हैं पैसे हमारे, रिस्क हमारा, और चेकिंग भी हमारी. तो मतलब क्या ये खुला तजाद है मेरे ख्याल से. तो हम लोग ये चीज सह चुके हैं कि जब आपके पैसे लैंड करते हैं, टेक्स अप टू 26 डेज, कुछ 5-7 किस्म की अंडरटेकिंग्स, और उसके बाद कुछ फॉर्म्स, और उसके बाद इन्वेस्टर प्रोसेस में मैंने देखा 35 स्टेप्स हैं जो कि उससे गुजर के आप जाएंगे तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो इन एंड आउट होगी. और क्योंकि अगर वो ट्रांच चाहिए तो दूसरी ट्रांच फिर इन्वेस्टर भेजता नहीं है. वो कहता है यार मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट चेंज करें, क्या करें, फिर किस तरह सेटल करें. और रिपैट्रिएशन तो अभी नई चीज आई है. जो बैंक्स का जवाब आता है, इनकरेज्ड है, एनफोर्स्ड नहीं. राइट. सो ये इन एंड आउट जो है वो एंट्री एग्जिट इज द बिगेस्ट इशू एट द मोमेंट. जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि क्या आपको सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी से क्या होना चाहिए जो कि इस डीप टेक एरिया को जो है बहुत अनलॉक कर सकता है पोटेंशियल को? आई एग्री विद व्हाट द ब्रदर सेड कि इसमें जो सब हमारे लिए एक तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक तो अथॉरिटी बनाई गई है ड्रोन की आई गेस, और वो जल्दी से उस पे अप्रूवल आ जाए ताकि डिलीवरी एटलीस्ट स्टार्ट हो. राइट. एक तो फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर ऑपरेशन ऑफ ड्रोन्स. अभी जो करंट फ्रेमवर्क है वो ये है कि यू गो टू द एरिया डीसी, ask for one time permission, do the project and then ask for another permission. It's very tedious. अच्छा, दूसरी जो बड़ी इशू है वो हमें ये है कि जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, बट द प्रोसीजर इज सो लॉन्ग कि द कस्टमर गेट्स टर्न्ड ऑफ एंड जैसे कि भाई आपके तो पोर्ट पे पिछले 2 महीने से पड़ा हुआ है, यू नो, जस्ट टू गेट इट अक्रॉस, it's a hassle, and that is why they get bemused. I think वो जो एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं, पैसा मंगवाना कोई मसला नहीं है, आप भी जाते हैं, क्योंकि हम आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल अमाउंट्स, नॉट वीसी फंडिंग. तो जो ऑर्डर्स आते हैं उनके पैसा आ जाते हैं, बट द वे द एक्सपोर्ट इज प्रोसेस्ड, दैट इज वेरी टीडियस. सो दैट्स अगेन द सेम इशू कि बाहर जब आप एक्सपोर्ट मार्केट को टैप करने जाते हैं तो पैसा जो आता है उसके आने और जाने में जो बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. मैं एक लास्ट बस आपसे जो है एक नंबर शेयर करूंगा. पाकिस्तान में लास्ट ईयर 2021 में रफली $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टार्टअप्स में आई है. $400 मिलियन. और ये जो नंबर है ये पिछले 6 साल से डबल है. कंबाइन कर लें 6 साल को, उससे डबल नंबर है, और लास्ट ईयर से 5 टाइम्स ऊपर है. और इस साल अभी एज वी स्पीक अभी तक जो नंबर आ चुका है इन्वेस्टमेंट का, जो अनाउंस हो चुका है इनफैक्ट, वो रफली कोई $275 मिलियन है. आप ये देखें, इस चीज पे मैं बात खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट आमने सामने है. हमारे यहाँ मैक्रो इकोनॉमी इज नॉट डूइंग सो वेल ईदर, येट हमारे एक बड़े स्टार्टअप ने $70 मिलियन रेस किया है. पाकिस्तान पे $70 मिलियन उसने जो है वो अट्रैक्ट किया है.
डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमी का इशू है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो सोचे जब हमारे यहाँ चीज़ें स्टेबलाइज होंगी तो हम कितना पोटेंशियल जो है वो रेस कर सकते हैं, कितना अट्रैक्ट हम कर सकते हैं इन यंगस्टर्स की वजह से। तो वो कहते हैं ना कि जी ज़रा नम हो तो बड़ी जरखेज़ है ये मिट्टी साकी, तो दैट्स एक्चुअली ट्रू अबाउट पाकिस्तान। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं इस नोट पे ख़त्म करता हूँ। एक सवाल अलमास साहब शायद करना चाह रहे हैं, हाथ खड़े करें प्लीज़। बिकॉज आप लोगों की जो स्पेस है वो बनी इसलिए रही है क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं है। इट इज़ ईजियर टू अपोलोजाइज देन टू टेक परमिशन। ओके, आप अपना काम करें और काम करने के बाद अगर कोई आपसे कहे कि क्यों किया तो उसे माफ़ी मांग लें, उसे कहिए हमें पता नहीं था, गलती हो गई है, आगे से सही कर देंगे। सो प्लीज़ डोंट आस्क फॉर मतलब फ्रेमवर्क, बिकॉज परमिशन लेनी पड़ जाएंगी और आप फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे, ये फिर स्टार्टअप नहीं रहेगा और ये उस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी नहीं आ सकेगी जो इस वक्त आ रही है। ओके, दूसरा ये है कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो सिस्टम्स है ना पोर्ट के ऊपर ख़ास तौर पे, वो उसको एक समझने की ज़रूरत होती है। सिर्फ वहाँ पे जो आपके क्लियरिंग एजेंट है उनको बड़ी अच्छी तरह समझ है इसको कैसे काम करवाना है हमने। नॉर्मली उससे प्रॉब्लम नहीं आता। जहाँ तक बैंकों का ताल्लुक है, बैंक असल में जब से ये FATF आया है और इनको जो डायरेक्शंस आ रही हैं, ये लोग आपसे ज़्यादा खौफजदा हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा पैसा आ गया तो बेहतर ये होता है कि जब आपके पैसे आने वाले हों उससे पहले आप इनकी मैनेजमेंट से इंगेज हो जाएं। ये नहीं कि पैसे आने के बाद हो इंगेज। जब आप पहले इनसे इंगेज हो जाएंगे तो ये बहुत सारे लोग, इनको पहले ही पता लग जाएगा कि कुछ होने वाला है। और अगर हो सके तो स्टेट बैंक को भी इतला कर दें कि हमारे $10 मिलियन, $50 मिलियन, $60 मिलियन आने वाले हैं। जब वो अवेयर होते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। जब ये अवेयर नहीं होते तो ये घबरा जाते हैं। इन्होंने कभी ऐसे पैसे देखे नहीं हैं। सर आपको पता है आप $10 मिलियन की सिर्फ बात करेंगे ना, वो आपके घर पे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने। आज ये हाल है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for your very insightful input, sir. Thank you very much. With this, this session comes to an end. I would like to thank each one of you. खासकर जो हमारे लाहौर के जो है वो गेस्ट हैं, 3 हैं इनफैक्ट, जैन है, बल्कि जो स्टार्टर्स हमारे तीनों लाहौर से हैं, डॉक्टर साहब कराची से। Thank you very much everyone. Thank you and thank you Rabia. Please go ahead. An excellent panel, and obviously startups is something which we are learning from, and also the I guess the corporate sector is also learning about. I'd like to invite the session chairperson of Vakarul Islam Sahab, who's the CEO of Jaffer Business Systems, to come and join me center stage and acknowledge and give all of the speakers, panelists, a token of our appreciation. Sir, thank you. Thank you. Can I request Bilal Amjad, the Chief Executive Officer of Instacare, to please accept a token of our gratitude. This is just something small, Bilal. And thank you. We're extremely grateful that Bilal, you were able to come down from Lahore. Next, Ms. Sana Mela, who is the VP Strategy at Swift Logistics. The founder and CEO of MyTim, Zain Farooq, who has also been very gracious with his time and come down especially from Lahore. And Zain, again, an incredible personal, I guess, your personal story about changing professions completely, very, very inspirational. Our last presenter and panelist, Dr. Bilal Siddiqui, Founder and Chief Operating Officer of WootTech. And of course, our esteemed moderator, Khurram Shehzad, who's an investor and entrepreneur and founder at Alpha Beta Core. Before I ask all the speakers to have a group photograph with Vakar Sahab, Khurram, if you can have a seat, I'd like to also invite Maria Arif, who's the head of HR at Swift Logistics. Swift Logistics is a partner for this conference, and we'd like to extend a token of our gratitude and leverage Vakar Saab's presence to give the award. And if I could please request all the panelists to join Vakar Saab for a group photograph. And again, we're very, very grateful for Bilal Amjad, Sana Mela, and Zain Farooq, who have flown especially from Lahore to be part of this event. So extremely
grateful for your time and effort. Vakar Saab, if I could please ask you to make a couple of comments based on the presentations. Speakers and panelists, if you'd like to step off stage, that's fine. अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में इतनी देर हो गई है और लोग जितने भी बचे हैं वो इतने थके हुए हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक वो किसी का बहुत अच्छा शेर है कि मैं ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो ये जितने भी लोग आपके सामने थे ये ख्वाब देखते हैं और ज़बरदस्त ख्वाब देखा, और सिर्फ ख्वाब नहीं देखा, उसको आगे भी लेके गए। मैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो मैं पॉजिटिव बातें करता हूँ और बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंगली मुझसे इसलिए नाराज़ रहते हैं कि तुम इतनी पॉजिटिव बातें क्यों करते हो। तो कई वजूहात हैं जिनकी बिना पे मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है, शायद हम यहाँ ना हो, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ज़बरदस्त है। एंड व्हेन आई से दिस मेनी पीपल क्वेश्चन मी कि ये नहीं हो सकता। मैं आपको 5-6 इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स बताता हूँ बहुत जल्दी ताकि आपको पता लगे क्यों मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। ये पिछले कोई 40-50 साल में हमने इनको क्या इंडेंजर्ड स्पेसी कर दिया था कि ये नए एंटरप्रेन्योर्स की स्पेसी ख़त्म होती जा रही थी। ये पूरी रिकिंडल हुई है। उसका एक सिर्फ आपको स्टैट्स दूँ कि अगर आप SECP का डेटा देखें तो 3 साल पहले तक SECP में कोई 96,000 कंपनीज रजिस्टर्ड थी। तो जब से यानी चीज़ें शुरू हुई पाकिस्तान में, और उस वक्त से अब तक 3 साल पहले तक सिर्फ 96,000 कंपनी, पिछले 3 साल में 50,000 कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। सो दैट टेल्स यू द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स, न्यू पीपल कमिंग इन, पहली चीज। दूसरी, एस्टिमेटेड इस वक्त कोई 10 लाख कम से कम लोग हैं जो फ्रीलांस हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी करते थे, अब ये वो लोग हैं जो स्किल होके अपनी सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं। 10 लाख लोग, शायद ये नंबर इससे कहीं बड़ा है, लेकिन 10 लाख लोग वो हैं जो हमें पता है। अगेन, एंटरप्रेन्योर हैं, अपना काम कर रहे हैं, परेशानी नहीं है। तीसरी चीज कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में कभी पैसा आया ही नहीं। ये मैं जब लोगों को बताता हूँ तो लोग मानते नहीं है मेरी बात को। किसी बड़े बिजनेसमैन ने इस पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में पैसा ही नहीं लगाया। वो वही पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते थे, वो लगाते हैं। अभी खुर्रम ने आपको स्टैट्स दिए हैं कि पिछले 1.5 साल में कोई $600 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में आई है। तो अगर हम 30 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, आज ये मुल्क फ़र्क होता। लेकिन आज कर रहे हैं तो लॉजिक ये कहती है 3 साल बाद, अगर 30 साल थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, 10-15 साल बाद ये मुल्क फ़र्क हो जाएगा। फ्यूचर दुनिया में 2 तरह की कंपनीज का है मेरे नज़दीक, या वो जो टेक्नोलॉजी बेचती हैं, या वो कंपनीज जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं अपने बिजनेस करने के लिए। यही 2 तरह की कंपनीज हैं। और ये जो भी आपने 4-5 स्टार्टअप्स की कहानी सुनी, दे आर द पीपल हु विल ड्राइव द चेंज इन दिस कंट्री एंड पॉसिबली अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो ब्रिक एंड मोटर को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, कागज़ से इतनी मोहब्बत है कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ मुश्किल से जाएंगे। तो ये लोग उन्हें फोर्स करेंगे कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। आखिरी बात, मैं पर्सनली अपनी जनरेशन का कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। मेरा ख्याल में इस मुल्क की जो मेरी वाली जनरेशन है, वेस्टेड जनरेशन है कम्प्लीटली। हमने, जो हमारे वालिदैन ने हमें मुल्क दिया था, हम उससे बहुत बुरा मुल्क अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, राइट। लेकिन मैं एक बात यकीन से कहता हूँ कि ये बच्चे जब अपने बच्चों को मुल्क हवाले करेंगे, ये मुल्क बड़ा फ़र्क होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Vakar Saab, and the prayer from your lips to the ear of God. May things continue to improve for Pakistan. And yes, the startups are those critical companies that will drive this change. May I please request Talib S. Karim Saab, who's the president of the Management Association of Pakistan, to give Vakarul Islam Saab a shield and a token of our thanks. Vakar Saab, of course, is the CEO of Jaffer Business Systems and also the session chair.
Thank you very much, sir.